So, first of all, what is infective endocarditis? Infective endocarditis is a microbial infection of the endocardial surface, that is the endothelial surface of the heart. Native or prosthetic heart valves are most frequently involved sites, and it also involves the septal defects, the mural endocardium, the intravascular foreign devices such as intracardiac patches, and surgery constructed shunts and intravenous catheters. What is the epidemiology of infective endocarditis? The annual incidence rate is USA is 0.05 to 0.12 cases per 1,000 pediatric admissions. The incidence of endocarditis in general population is 5 per 100,000. But in high-risk groups, the incidence is increased to 300 to 2,000 per 100,000. In moderate high-risk groups, it ranges from 50 to 440 in 100,000 persons. In high-risk groups, what are the high-risk groups? How do you say this is a high-risk group? The high-risk groups are when the patient has a prosthetic valve. Prosthetic valve means an artificial valve. Previous episode of endocarditis complex, there is a history of complex cyanotic congenital heart disease that can be a transposition of great artery, tetralogy of Fallot, or as we discussed previously, such as HLH or something like that, tricuspid atresia. Surgery constructed a systemic artery to pulmonary artery shunts, injection drug use, and indwelling surface central venous catheters. The moderate risk group include uncorrected patent ductus arteriosus, uncorrected VSD, uncorrected ASD, other than the secondary ASD. A bicuspid aortic valve, mitral valve prolapse with regurgitation, rheumatic mitral or aortic valve disease, and other acquired valvular diseases. And hypertrophic cardiomyopathy. Infective endocarditis was classified as acute or subacute, but the recent tendency has been to avoid this terminology. What happens? It is preferred to describe the disease based on etiologic agent, that is, the infection causing the infective endocarditis. If they are low virulence organisms, which are low virulence organisms? Alpha hemolytic streptococci, enterococci, or coagulase negative staphylococci, usually cause a prolonged subacute form of illness. On the other hand, Staph aureus and other pyogenic bacteria such as Streptococcus pneumoniae or beta hemolytic streptococci, usually illness associated with these organisms, it has a more virulent and acute illness. Now, the various other agents that cause infective endocarditis are streptococci that may include alpha hemolytic, which is the most common, then beta hemolytic, the enterococci and pneumococci, and staphylococcus includes Staphylococcus aureus, that is the second most common. The coagulase negative is uncommon, but it is increasing, and the gram-negative agents include Pseudomonas, Neisseria, and the fungi include the Candida species that are, but it is uncommon. Now, there was a study that found that bacteria most frequently responsible for endocarditis are Viridian streptococci. They display a propensity for adherence to the human valves. ठीक है, Viridian streptococci यहाँ attack करते हैं valves के ऊपर. Viridian streptococci are responsible for most of the cases of the endocarditis in all the age groups in developing countries, whereas predisposing condition is a rheumatic heart disease. जब भी कोई valvular lesion होगा तो Viridian streptococci उस valve पे attack करेगा and it results in infective endocarditis. Staphylococcus aureus and coagulase negative Viridian group streptococci in the developing countries. Gram-negative organisms cause less than 10% of endocarditis. However, neonates, immunocompromised, and injection IV drug users are at increased risk for gram-negative bacteria. And in IV drug users, other organisms isolated aureus
and Candida or other fungal species. Prostatic valve endocarditis. The infective endocarditis depending less than 2-3 months after the surgical procedure, or it occurs late. Prostatic valve endocarditis frequently is called the Staph aureus or coagulase negative staphylococci. These infections are implanted at the time of surgery and are seen in less than 60 days after the cardiac surgery. Coagulase negative staphylococci may present as late as 1 year after the surgery. Fungal endocarditis is relatively unusual in the children, although it is one of the most feared form of endocarditis. Fungal endocarditis can occur in immunocompromised patients, in the IV drug users, in the patients with a broad spectrum antibiotics for a prolonged period of time, and who have a cardiovascular device such as a prostatic cardiac valve or a central venous catheter. Candida species are the most common organism among the fungus, but other than that, Aspergillus species and other fungi include Histoplasma, Coccidioides, and Cryptococcus also have been reported. The mortality rate from the fungal endocarditis is very high, even with the intensive medical and surgical therapy. Pathogenesis. All the vegetations occur in area where there is a pressure gradient with the resulting turbulence of the blood flow, such as a flow from high chamber to a low pressure chamber across a narrowed orifice. This flow traumatizes the endothelium, and thrombogenesis occurs at such a site and results in the deposition of sterile clumps of platelets, fibrin, and formation of a non-bacterial thrombus. This provides an environment to which the bacteria can adhere and eventually form an infected vegetation. Now, the clinical manifestations and complications of the endocarditis are directly related to the hemodynamic and structural changes caused by the local infection. By the embolization from the vegetations, or by the immunologic reactions by the host. Findings also may be different in children as compared with the adults. Most cases of the endocarditis in the adults are valvular, but the endocarditis in the children with congenital heart disease may often involve other structures such as mural endocardium, patent ductus arteriosus, and arteries or other vascular sites such as a shunt or a conduit. Now, history. What you have to ask in the history of infective endocarditis patient, you have to ask about the non-specific symptoms like myalgia, arthralgia, malaise, anorexia, weight loss, night sweats, and prolonged fever of unknown origin. A prolonged fever, इसका कोई cause पता नहीं चल रहा. Such as headache, seizures, stroke, history of underlying heart disease, history of surgical and interventional procedure, and history of IV drug abuse. Endocarditis involving the left side of the heart frequently results in peripheral embolization, leading to ischemia, infarction, and mycotic aneurysms. In these cases, the specific clinical findings depend on the localization of the emboli. In the children, the embolization from the right heart may be no less frequent, but such emboli, if small, are not easily appreciated clinically because of the filtration of the lungs. However, large of the tricuspid valve. Okay, these are the clinical features. This is the table. It is a repetition almost. The general symptoms include the malaise, clubbing. On the cardiac auscultation, you will find a murmur, or there may be signs of cardiac failure. Arthralgia is present, pyrexia is fever. Skin lesions include ocular nodes, sphincter hemorrhages, Janeway lesions, and petechiae. Now, in the eyes, you can find the rod spots, the conjunctival splinter hemorrhages,
स्टेनोमेगाली इज प्रेजेंट. न्यूरोलॉजिकल साइंस में आपको सेरेब्रल एम्बोलाई मिलेगा, माइकोटिक एन्यूरिज्म मिलेगा और हीमेचुरिया मिल सकता है. Now this is a picture showing the Osler nodes. Here you can see these are the Osler nodes, painful red raised lesions that are found on the hand and feet, and they are painful. These are the rod spots. These are present on the thenar and the hypothenar surfaces, and they are not nodular, but they are palpable. These are the rod spots. This is the picture of a fundoscopy of the retina and showing now difference between the Janeway lesions and the Osler nodes. The Janeway lesions are present on the soles, palms, thenar and hypothenar eminences, plantar surfaces of the toe. The Osler nodes are present on the fingertips and the toe tips, thenar and the hypothenar eminence. The Janeway lesions are macules of variable size and variable shape, whereas Osler nodes are the nodules of 1 millimeter or greater than 1 centimeter. Janeway lesions are tender, Osler nodes are not tender, coarse, whereas the Osler nodes occur in hours, 2 days. And Janeway lesions occur in acute endocarditis, whereas Osler nodes occur in the subacute endocarditis. In the Janeway lesion, the culture is usually positive, whereas in Osler nodes, it is negative. The Janeway lesions are due to a septic microemboli. So it is bacterial in origin, but in Osler nodes, it is due to the immunologic mechanism and it causes vasculitis, and then the Osler nodes are formed. Neonates who are symptomatic clinical signs are compatible with the generalized sepsis or focal neurologic findings from the central venous system. Embolization may be the clues to the development of endocarditis. Now, definition of infective endocarditis according to the modified Duke's criteria. Now, the definitive infective endocarditis what is the Duke's criteria? Here you have to see there is a clinical criteria which includes 2 major criteria, or 1 major and 3 minor, or 5 minor. ठीक है, 2 मेजर हो या 1 मेजर और 3 माइनर हो या फिर 5 माइनर हो. और पैथोलॉजिक क्राइटेरिया क्या है? पैथोलॉजिक क्राइटेरिया इंक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेमोन्स्ट्रेशन बाय द कल्चर और हिस्टोलॉजिक एग्जामिनेशन ऑफ a vegetation that has embolized or an intracardiac abscess specimen, or pathologic lesions with vegetation or intracardiac abscess confirmed by histologic examination showing active endocarditis. ठीक है, अब हम कहते हैं पॉसिबल इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस. पॉसिबल इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस कब होगा? जब 1 मेजर क्राइटेरिया होगा और 1 माइनर क्राइटेरिया होगा और 3 माइनर क्राइटेरिया. ठीक है, rejected infective endocarditis we will say when there is firm alternative diagnosis. को यार और आपने diagnosis infective endocarditis के with antibiotic therapy in less than 4 days. And there is no pathologic evidence of infective endocarditis at surgery or autopsy with antibiotic therapy of less than 4 days. ठीक है, या फिर the patient does not meet the criteria for possible infective endocarditis that is given above. ओके, मेजर क्राइटेरिया में हमने कहा था कि ब्लड कल्चर मेजर क्राइटेरिया में है. ब्लड कल्चर मेजर क्राइटेरिया में है, तो उसमें टिपिकल ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस फ्रॉम 2 सेपरेट ब्लड कल्चर्स. एक ब्लड कल्चर पे आप इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को पॉजिटिव नहीं कहेंगे, आपको एटलीस्ट 2 ब्लड कल्चर्स लेने हैं. और कौन सा organism होने चाहिए? Viridian streptococcus, Streptococcus bovis, Hasek group, Staph aureus, and community acquired enterococci in the absence of a primary foci. Or microorganisms that consist with infective endocarditis from persistently positive blood cultures. यानी multiple blood cultures आ रहे हैं, वो positive हैं, so you will say that is a major criteria is achieved. And it is defined as at least 2 positive blood culture from the samples drawn at least 12 hours apart, or all of the 3 or majority of the cultures from more than 4 separate cultures of the blood with first
and the last sample drawn more than 1 hour apart. ठीक है, आपने 24 आवर्स के अंदर ब्लड कल्चर्स लेने हैं, लेकिन 2 कल्चर्स के दरमियान 1 आवर का गैप होना चाहिए. ठीक है, सिंगल पॉजिटिव ब्लड कल्चर जो है वो सिर्फ इस ऑर्गेनल कॉक्साइटा बर्नेटी के लिए है. अदरवाइज यू हैव टू you must have at least 2 blood cultures. Evidence of endocardial involvement. एंडोकार्डियल ये भी आपका मेजर क्राइटेरिया में है. एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट, इसमें इकोकार्डियोग्राम करेंगे आप. इकोकार्डियोग्राम में आपको क्या मिलेगा, या तो फिर ऑसिलेटिंग इंट्राकार्डिक मास और ऑन द वैल्व्स और द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स इन द पाथ ऑफ द regurgitant jets, or an implanted material in the absence of an alternative anatomic explanation, or a presence of abscess in the heart, और a new partial dehiscence of the prostatic valve. Prostatic valve है और उसमें लीकेज शुरू हो गई है, तो that is also a major criteria in the echo. New valvular regurgitation, worsening or changing of the pre-existing murmur is not sufficient. आपको सिर्फ murmur change होना सही काफी नहीं है. You have to see a new valvular regurgitation. Okay. Now minor criteria. Minor criteria में क्या आएगा, predisposing heart condition, or a patient is IV drug user, if the patient is having temperature more than 38 degrees centigrade, patients having a vascular phenomena, major arterial emboli, septic pulmonary infarcts, mycotic aneurysms or intracranial hemorrhage, or conjunctival hemorrhages, or the Janeway lesions. इम्यूनोलॉजिक फिनोमेना में या तो आपको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का वो मिल जाए, एविडेंस मिल जाए, ऑस्लर नोड्स हैं, रॉथ स्पॉट्स हैं, और र्यूमेटॉइड फैक्टर आरए फैक्टर आपको पॉजिटिव मिल जाए लैब्स के अंदर. माइक्रोबायोलॉजिक एविडेंस में पॉजिटिव ब्लड कल्चर होगा, बट डज नॉट meet a major criteria as noted as we have discussed above, or serologic evidence of active infection with organism consistent with infective endocarditis. मतलब पॉजिटिव अगर सिर्फ एक ब्लड कल्चर पॉजिटिव है और जो आपका सीरोलॉजिक एविडेंस है वो भी जो मेजर क्राइटेरिया को नहीं अगर मीट करा, तो देन आप उसको माइनर क्राइटेरिया में रखते हैं. लेबोरेटरी डायग्नोसिस में आपने ब्लड कल्चर हमने पहले भी डिस्कस क्या कराना है. पॉजिटिव ब्लड कल्चर विद अंडरलाइंग और प्रीडिस्पोजिंग कार्डियक डिजीज और हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस एंडोकार्डाइटिस डज नॉट नेसेसरली इंडिकेट एंडोकार्डाइटिस. It is imperative that the diagnosis be considered in such a patient. ठीक है, सिंगल ब्लड उससे डायग्नोसिस नहीं बनेगा. या अगर प्रीवियसली बच्चे को congenital heart disease और फीवर हो गया तो आप इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस नहीं बोलेंगे उसको. You have to prove it is infective endocarditis. Now, how you have to collect the blood sample for blood culture infective endocarditis? The samples of 3 separate sets of blood cultures, each from a separate venipuncture over a 24-hour period. The volume यानी 24 घंटे में आपने एटलीस्ट 3 सैंपल्स कलेक्ट करने. वॉल्यूम ऑफ द ब्लड कलेक्टेड इज ऑल्सो मेजर कंसिडरेशन. कितना ब्लड आप कलेक्ट करेंगे? 1 to 3 ml of infants and young children, 5 to 7 ml in older children, and usually 20 to 30 ml in adult patients. Now, अब AHA की गाइडलाइंस है ब्लड कल्चर के लिए. ब्लड कल्चर should be drawn for the patients with history of unexplained fever of unexplained origin or pathologic heart murmur, and a history of heart disease or previous infective endocarditis. It is reasonable to obtain 3 blood cultures by separate venipuncture on the first day, and there is no growth by the second day of incubation. obtain 2 or 3 more. ठीक है, आपने ब्लड कल्चर लिए, 3 कल्चर्स लिए, लेकिन 24 घंटे में उसमें कोई ग्रोथ आपको पैथोलॉजिस्ट को नजर नहीं आई. सो यू हैव टू टेक मोर कल्चर्स. इन पेशेंट्स हु आर नॉट acutely ill or whose blood cultures remain negative, withholding antibiotic for more than 48 hours, while additional blood cultures may be considered to determine the cause of infective endocarditis. ठीक है, पेशेंट अगर सिक नहीं है आप एंटीबायोटिक होल्ड कर दें. अगर ब्लड कल्चर नेगेटिव आ रहा है और होल्ड करके 48 आवर्स तक होल्ड करें और फिर दोबारा ब्लड कल्चर लें. अच्छा, इसके बाद आपने in patients with acute infective endocarditis who are severely ill and unstable, 3 separate venicultures for blood culture should be performed over a short period such as 1 to 2 hours, और फिर आप उसको empirical antibiotic start कर दें blood cultures लेने के बाद. If fastidious or usual, again fastidious
ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं जिनको स्पेशल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ग्रो होने के लिए? देयर आर फास्टिडियस ऑर्गेन. सो if there is a fastidious or unusual organism is suspected, the director of the microbiology lab or a consultant in the PEDS infectious diseases should be consulted for help in diagnosis and especially for guidance on molecular pathogen identification when use of serologic testing is likely to be beneficial. Now, the culture of arterial blood is not more useful than the venipuncture because it does not yield over venous blood cultures, but it is susceptible only arterial blood samples are able to, if only arterial blood samples are able to obtain. ठीक है, तो आपने वेनस पंक्चर से ही लेना है ब्लड कल्चर के लिए. आर्टीरियल पंक्चर को कोई एडिशनल एडवांटेज नहीं होता, लेकिन अगर किसी में वेन पंक्चर नहीं हो या आर्टरी पंक्चर हो गया तो ओके, इट्स ऑल राइट, यू कैन टेक इट. Culture negative endocarditis. आप कब कहते हैं culture negative endocarditis? Diagnosis made when the patient has a clinical or echocardiographic evidence of infective endocarditis, but persistently child is having or patient is having negative blood cultures. The most common cause of culture negative infective endocarditis is inadequate microbiologic techniques, infection with highly fastidious bacteria, previous administration of antimicrobial agents before blood cultures, low sensitivity of blood cultures for yeast, and virtually no sensitivity for filamentous fungi. Right-sided endocarditis, in which the organisms are filtered by the lungs. Okay. The culture negative endocarditis was diagnosed in 8 to 36% of patients were clinically diagnosed with endocarditis and persistent negative blood cultures. This was 2015 update. Okay, echocardiography पे आपने 2D echocardiography is the principal diagnostic method in case of suspected infective endocarditis. In children in children reported to be more than 80%. Neither sensitivity nor the specificity of echocardiography is 100%. Therefore, a negative echocardiogram does not rule out endocarditis. ठीक है? Transthoracic echocardiography generally is more helpful in children with normal cardiac anatomy or isolated valvular abnormalities and septal defects than it is in children with complex congenital abnormalities. ठीक है, तो ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राफी तब भी आप कर सकते हैं जब नॉर्मल एनाटॉमी हो हार्ट की. T. What are indications of T and what is T? I want to tell you this is transesophageal echocardiography. जिन बच्चों में या जिन पेशेंट्स में ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राफी नहीं हो सकती, उसके अंदर हम एसोफेगस के अंदर एक ट्यूब डाल के वहां से इकोकार्डियोग्राफी करते हैं. टी हम तब करते हैं जब पुअर इको विंडो हो, पेशेंट का चेस्ट डिफॉर्मिटी हो या बहुत ज्यादा फैटी पेशेंट है, आपको प्रॉपरली नजर नहीं आ रहे व्यू, सो यू हैव टू गो फॉर अ टी. High clinical suspicion of infective endocarditis for negative or non-diagnostic on transthoracic echo. High clinical probable of infective endocarditis such as modified Jukes criteria indicate possible infective endocarditis. और आपको blood आपको नहीं मिल रहा echo में कुछ भी, तो you have to do RT. Patient with prostatic valves or intracardiac devices, dehiscence in the prostatic valve as it occurs in other patients, paravalvular leak. Also assess the development of complications of the left ventricular outflow tract. Now recommendations for T क्या है? ट्रांसइसोफेगल के लिए क्या रिकमेंडेशन है? एचए की रिकमेंडेशन है कि it is recommended for infants and children who have chest wall disruptions from the previous surgery or trauma or who have congenital anomalies involving the thoracic cage, and it is also helpful to perform the T in pediatric patients who are at high risk for aortic root abscess. aortic root में अगर कोई abscess है तो आपको transthoracic में नजर नहीं आएगा, transthoracic echo में, which can complicate the native or the prostatic aortic valve infective endocarditis. अदर लेबोरेटरी टेस्ट जो आपने करने हैं उसमें वो हेल्प करेंगे आपको मैनेजमेंट को. अक्यूट फेज रिएक्टेंस देखना है, आपने सीआरपी देखना है, आपने ईएसआर चेक करना है. इनिशियली द ईएसआर इज ओनली मिनिमली एलिवेटेड, बट as the disease progresses the ESR will usually increase. It remains elevated for some time even after the documented bacteriological cure.
About half of the patients with infective endocarditis may have detectable rheumatoid factor, that is RA factor, और या C3 C4 एंटीबॉडीज जो आप कराते हैं वो भी पॉजिटिव हो सकती है. एनीमिया इज कॉमन, और एनीमिया या तो हेमोलाइटिक टाइप का होगा या एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज. क्रॉनिक डिजीज का एनीमिया कौन सा होता है? नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक. तो हेमोलाइटिक एनीमिया होगा या नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक होगा. Macroscopic or microscopic hematuria represent either renal embolization or immune complex related nephritis. Now coming up to the management, how will you manage the infective endocarditis? Now the AHA guidelines kya hai in patients who are not severely ill, that is do not have a respiratory or hemodynamic compromise or change in Melton status, or whose blood cultures remain negative or whose cultures may be positive for organisms that are frequently contaminants. It is possible to withhold the antibiotic for more than 48 hours while additional blood cultures are obtained. ठीक है? A prolonged course of therapy आपने देनी है at least 4 weeks and often 6 to 8 weeks has been recommended practice. ठीक है? तो आपने जो ट्रीट करना है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को, वो आपने ब्लड कल्चर्स देने के बाद आईवी एंटीबायोटिक शुरू करानी है. और उसके बाद आपकी आईवी एंटीबायोटिक कितने अरसे तक चलेगी? एटलीस्ट 4 weeks, नॉट लेस देन 4 weeks, लेकिन ज्यादातर केसेस में 6 to 8 weeks is recommended. Bactericidal rather than bacteriostatic antibiotic drugs have been chosen whenever possible, and this recommendation is based on the past reports of treatment failures and relapses when only bacteriostatic antibiotic drugs were given. In infants and children, one should use intravenous antibiotic drugs rather than intramuscular drugs. The patients have a small mass is one of the reasons that the outpatient intravenous treatment of endocarditis may be considered in selected patients after treatment in the hospital, and confirmation that these patients are hemodynamically stable and afebrile, have negative blood cultures, and are not at high risk for complications. That is not of young age and not of do not have a fungal pathogen. Parents and patients' adherence to the medical plan is important when you are sending the patient home. You should make sure that they will adhere to the medical management. Frequent home monitoring by a home health nurse who assesses the wellness, adherence to the DEC therapy, absence of the complications and absence of drug toxicity is a part of the plan. It is the reason that such a standard would include prompt access to the medical and surgical care, and cardiac follow-up should follow for the complications if the complications develop. Okay. Now, if the infection is by a streptococcal infective endocarditis on a native cardiac valve, a 4-week regime of intravenous crystalline penicillin G or ampicillin achieves a high cure rate, and those with highly penicillin susceptible streptococcal infective endocarditis. Now, this approach avoids aminoglycoside containing regimens for children with impairment of renal function and concurrently administered nephrotoxic drug or aid cranial nerve impairment. In adult patient, 4 weeks of therapy with ceftriaxone given once daily is recommended with the as a recommended approach. ठीक है? तो आपने IV एंटीबायोटिक देनी है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में 4 weeks के लिए, जब नेटिव वेल्व कोई प्रोस्थेटिक मटेरियल यूज ना. और उसके अलावा अगर आपको पेनिसिलिन रेजिस्टेंट विरिडियन स्ट्रेप्टोकोकस मिला है तो उसमें आपने क्या करना है? पेनिसिलिन जी और सेफ्ट्राइक्सोन फॉर 4 weeks प्लस जेंटामाइसिन फॉर 2 weeks और वैनकोमाइसिन फॉर 4 weeks. अच्छा, अब इसमें आपने AHA की गाइडेंस प्रोस्थेटिक अगर हार्ट वेल्व है या स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो रहा है तो उसमें आपने क्या करना है? उसमें आपने देना है 6 weeks के लिए पेनिसिलिन देनी है, पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन और सेफ्ट्राइक्सोन combined with gentamicin for the first few weeks of the therapy. ठीक है? अगर प्रोस्थेटिक वेल्व है तो आपने क्या करना है? 6 weeks के लिए देनी है पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन या सेफ्ट्राइक्सोन combined with the gentamicin for the first 2 weeks. If the organism has a very high MIC, you have to give gentamicin for 6 weeks also, along with penicillin, ampicillin or ceftriaxone.
ठीक है। AHA recommendation for enterococcal infective endocarditis on native और the prosthetic cardiac valves, इसमें क्या है, एंटीरोकोकल इन्फेक्शन में भी आपने पेनिसिलिन जी देनी और एम्पेसिलिन टुगेदर विद जेंटामाइसिन फॉर 4 to 6 weeks with a longer duration of therapy in cases of involving prosthetic material, यानी कभी कभार आपको 6 weeks से भी ज्यादा देनी पड़ जाती है थेरेपी। ठीक है। कंसेंसस ऑफ राइटिंग ग्रुप इज द मैनेजमेंट ऑफ विद enterococcal infective endocarditis should always involve infective and infectious disease consultation as standard care. Okay, in case of staphylococcal endocarditis or native valves, it is recommended for methicillin susceptible Staph aureus involving a native valve or other native cardiac tissue, beta-lactamase resistant penicillin, that is nephicillin or oxacillin, given intravenously for a minimum of 4 to 6 weeks. An addition of gentamicin for the first 3 to 5 days is considered for the killing of staphylococci. ठीक है। तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में भी आपने 4 to 6 weeks अगर मेथिसिलिन सेंसिटिव है तो वो आपने देना मेथिसिलिन सेंसिटिव, और 3 to 5 days के लिए आप जेंटामाइसिन ऐड करेंगे। Treatment of patients with methicillin resistant staphylococcal endocarditis with vancomycin for a minimum of 6 weeks with or without gentamicin for the first 3 to 5 days is recommended except when the organism is not susceptible to vancomycin. And patient with Staph aureus endocarditis should be cared for in medical facility with cardiothoracic surgery capabilities and infectious disease consultation. As with other infective endocarditis, decisions concerning outpatient therapy may be considered on the individual basis. Now, staphylococcus endocarditis with prosthetic material, again, you have to check for methicillin sensitive or methicillin resistant, and you have to give, according to that, antibiotic, and aminoglycoside can be stopped after 2 weeks. ठीक है। प्रोस्थेटिक मटेरियल है तो आपने अमाइनोग्लाइकोसाइड को 2 weeks के लिए देना है, और बाकी थेरेपी आपको 6 weeks और मोर देन 6 weeks आपने देनी है। एंड valve replacement surgery should be considered and preferred in most of the if not patients with a prosthetic valve infection caused by the Staph aureus. उसके अलावा अगर हैसिक ग्रुप है तो उसमें भी आपने 4 week कोर्स ऑफ सेफ्ट्राइक्सोन देना है along with the 3rd generation of cephalosporin और ampicillin plus gentamicin। ठीक है। और अगर ग्राम नेगेटिव स्पीशीज आ रही हैं तो आपने एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन देनी है, दैट सच एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पिपरासिलिन एंड tazobactam, and extended spectrum cephalosporin, cephalosporin, that is ceftazidime or ceftriaxone, or along with the aminoglycoside with choice guided antibiotic therapy for a minimum of 6 weeks therapy. फंगल एंडोकार्डाइटिस के लिए क्या रिकमेंडेशन है? फंगल एंडोकार्डाइटिस में आपने इसमें इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ एंडोकार्डाइटिस टू ट्रीट, देयरफॉर सर्जरी हैज टू बी डन इन कंजंक्शन विद एंटी फंगल एजेंट्स, एंड अर्ली कंसल्टेशन विद इन्फेक्टियस डिजीज कार्डियोलॉजी एंड कार्डियक सर्जरी सर्विसेज इज रिकमेंडेड फॉर दीज पेशेंट्स। एम्फोटेरिसिन बी इज द मोस्ट ऑफन रिकमेंडेड ट्रीटमेंट फॉर विद और विदाउट फ्लूसाइटोसिन। ठीक है। तो फंगल एंडोकार्डाइटिस में आपने एम्फोटेरिसिन बी देनी है, फ्लूसाइटोसिन देनी है, और अलोंग विद दैट सर्जरी को कंसिडर करना है। अगर कल्चर नेगेटिव एंडोकार्डाइटिस आ रहे हैं तब भी आपने थेरेपी एंटीबायोटिक की स्टार्ट करनी है एम्पेरिकल एंटीबायोटिक से, और एटलीस्ट 4 weeks जरूर देनी है। अगर नहीं पेशेंट इंप्रूव कर तो आपने आप उसको 6 to 8 weeks भी कर सकते हैं। लेंथ ऑफ द ट्रीटमेंट, अब आपको ये पता चल गया कि हमने कौन सी एंटीबायोटिक्स यूज करनी है। दिस इज पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन ग्रुप फॉर 6 weeks along with a combination of gentamicin and aminoglycoside for at least for 2 weeks। ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रीटमेंट आपका 4 to 6 weeks होगा, डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिज्म, डिफरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। नाउ इकोकार्डियोग्राफिक फीचर्स suggesting potential need for surgical intervention। सर्जिकल इंटरवेंशन कब कब करानी है? एक तो हमने पढ़ा फंगल इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में करानी है, और कब करानी है? जब आपकी वेजिटेशन परसिस्ट करे आफ्टर द सिस्टमिक एम्बोलाइजेशन। एम्बोलाइजेशन हो गई एक दफा, फिर भी वेजिटेशन आ रही है इको के अंदर, तो आपने सर्जरी करवानी है। एंटीरियर माइट्रल लीफलेट पे वेजिटेशन है और उसका साइज मोर देन 10 millimeter है।
आपकी जो है A1 और 2 एम्बोलिक इवेंट्स हो चुके हैं आपके पेशेंट में, और विद इन द फर्स्ट 2 weeks ऑफ एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी, सो यू कंसिडर सर्जरी. 2 or more embolic events during or after the antimicrobial therapy. Increase in vegetation size after the 4 weeks of antimicrobial therapy also. यानी आपका जो आपने 4 weeks की थेरेपी दे दी है, तब आपने इको कराया, तब भी वेजिटेशन का साइज बड़ा हो गया, तो फिर आपने क्या करना है, सर्जरी करानी है, वेजिटेशन रिमूवल करवानी है. वैल्वुलर डिसफंक्शन का एविडेंस आ रहा है इको के ऊपर, एओर्टिक या माइट्रल इनसफिशिएंसी विद साइंस ऑफ वेंट्रिकुलर फेलियर, हार्ट फेलियर अनरिस्पॉन्सिव टू द मेडिकल थेरेपी, वैल्व परफोरेशन या रप्चर है या पेरीवैल्वुलर एक्सटेंशन है, यानी वैल्वुलर डायसेंस है, रप्चर है या फिस्टुला है, हार्ट ब्लॉक हो रहा है, large abscess है, extension of abscess despite appropriate antimicrobial therapy. For when to repeat the echo. When you have to repeat the echo, follow up and echocardiograms are done to detect the new silent complications and monitor the vegetation size. Repeat करेंगे आप transthoracic या transesophageal echo after 7 days of antibiotic therapy to compare the size of the vegetation, and there is dramatic decrease in the vegetation size after 1 week of therapy. Transthoracic echo is recommended at the completion of antibiotic therapy for the evaluation of cardiac and valve morphology and the functions. When to repeat the blood culture? Blood culture आपने repeat करना है 6 to 8 weeks after cessation of the treatment. 6 weeks to 8 weeks after cessation of the treatment, आप blood culture repeat करेंगे, because relapses can occur during this period. Now, predictors of poor outcome. Infective endocarditis में कौन से ऐसे फीचर्स होंगे जब आपके पेरेंट्स को काउंसलिंग करनी होगी पुअर आउटकम के लिए? उसमें है patient's characteristics. If the patient is an older patient, if the patient is having a prostatic valve infective endocarditis, patients having diabetes mellitus or other comorbidities, ठीक है, तो फिर आपका ये पेशेंट का पुअर प्रोग्नोसिस होगा, आपको इसके लिए काउंसलिंग करनी होगी. Clinical complications of infective endocarditis include heart failure, renal failure, ischemic stroke, brain hemorrhage, and septic shock. माइक्रोऑर्गेनिजम्स अगर तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है या फिर फंगस है या नॉन एसिड ग्रुप है, देयर आर आल्सो दे पुअर आउटकम होता है उनका. इकोकार्डियोग्राफिक फाइंडिंग में अगर फाइंडिंग आपकी सीवियर लेफ्ट साइडेड वेल्व लीकेज की है, लार्ज वेजिटेशन आ रही है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रहा है, पेशेंट को लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन लो है, या फिर आपका सिवियर प्रोस्टेटिक वेल्व डिसफंक्शन है, इन सब केसेस के अंदर आपके पेशेंट के अंदर पुअर आउटकम होगा. प्रिवेंशन आपने किस तरह करनी है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए? बिकॉज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद हाई मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी. देयरफॉर कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपको प्रिवेंट कर सकते हैं, आपको उसको प्रिवेंट करना है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है. एंडोकार्डाइटिस कैन ऑफन बी प्रिवेंटेड बाय रिपेयरिंग द अंडरलाइंग कार्डियक डिफेक्ट और रिड्यूसिंग द लाइक्लीहुड ऑफ बैक्टीरिया. कोई भी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप उसको कार्डियक सर्जरी करा के डिफेक्ट को क्लोज कर दें, और उसके अलावा पेशेंट्स को इन्फेक्शन से आपने बचाना है मैक्सिमम. ठीक है. Cardiac conditions associated with high risk of adverse outcome from infective endocarditis, for which the prophylaxis is recommended. In case of prostatic cardiac valve, for previous infective endocarditis, unrepaired cyanotic congenital heart disease, including palliative shunts or conduit, completely repaired congenital heart defect with prostatic material or device, whether placed by surgery or by catheter intervention during the first 6 months after the procedure. फर्स्ट 6 months के बाद क्या होते हैं, एंडोथीलाइजेशन हो जाती है. कोई भी आपने अगर डिवाइस लगाई है वो एंडोथीलाइज हो जाएगी, तो फिर उसमें आपको उसका देने की जरूरत नहीं होती है. लेकिन अगर प्रोस्टेटिक पैच लगा है तो फिर आपने देना है, या प्रोस्टेटिक वेल्व लगा है तो तब जो है आपने लाइफ लॉन्ग जो है वो देनी होती है.
लेकिन फर्स्ट 6 मंथ ज्यादा क्रूशियल होते हैं. रिपेयर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज विद रेजिडुअल डिफेक्ट एट द साइट और एडजेसेंट टू द साइट ऑफ prosthetic patch or device, and cardiac transplantation recipients who develop cardiac valvulopathy. ठीक है, तो इन सब कंडीशंस में आपने कोई भी डेंटल प्रोसीजर अगर हो रहा है उससे पहले आपने प्रोफाइलैक्सिस जरूर देना है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए. AHA limits the prophylaxis to dental procedures that involve manipulation of the gingival tissue or periapical region of the teeth and perforation of the oral mucosa. ठीक है. Prophylaxis is not appropriate, such as routine anesthetic injections through the non-infected tissue, taking dental radiographs, or placement of removable prosthodontic or orthodontic appliances, adjustment of orthodontic appliances, placement of orthodontic brackets, or shedding of deciduous teeth and bleeding from the trauma to the lips of the oral mucosa. Now, the routine prophylaxis for most procedures involve the upper and lower respiratory tract or upper and lower GI tract infections, or the genitourinary tract is recommended. Now, prophylactic regime में आप infective endocarditis prophylaxis में देंगे क्या? You have to give any agent single dose 30 to 60 minutes before the procedure. Oral prophylaxis by amoxicillin 50 mg per kg per orally, a maximum dose of 2 gram. And if the patient is unable to take oral medication, then ampicillin, that is 50 mg per kg intramuscular or intravenous, or ceftriaxone 50 mg per kg intramuscular or intravenous. ठीक है, तो आपने 30 मिनट्स पहले कोई भी जो है वो ये मेडिसिन देनी है, ओरल या आईवी. पेनिसिलिन एलर्जिक ओरल रेजिम में एजिथ्रोमाइसिन देंगे या क्लेरिथ्रोमाइसिन 15 mg per kg पर ओरली. एंड पेनिसिलिन एलर्जिक के अंदर आप देंगे क्लेंडामाइसिन 20 mg per kg और सेफाजोलिन भी दे सकते हैं 50 mg per kg. ठीक है, with this we come to the end of our lecture and hope you have understood infective endocarditis.